Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum to all of you. First of all, I would like to thank Mr. Mudassir and the Nurul Huda Education Foundation for giving me this opportunity to speak at this forum on Teacher International Day. Let's start our presentation. So today the topic of my presentation is educational leadership, emerging trends in education. I want to start my education with a simple quote that leadership in education is about learning. The learning of others has to be at the heart of the decision. My profile. By profession, I am a pharmacist and an educationist, and having an experience of 20 years in education. I am a diploma holder in the topic Educational Leadership and Management from Aga Khan University Institute for Educational Development. I am a digital trainer from Turning Point Training and Consultancy. I also earned a Master Trainer Diploma from Ilm Foundation, the Center of the Educational Excellence. I am a certified charismatic trainer and public speaker from the First Institute of Dynamic Learning. I have also completed different courses from Railway Pakistan and also a founder of an online training organization with the name of Move Ahead. Let's see today's objective. The objective of today's sessions are, Inshallah Ta'ala, I will discuss about the meaning of the educational leadership, what is the digital leadership, and how many style of the leaderships are using in the field of education. Then we will see that to understand the specific leadership style, the particular leadership style which is used in the educational organization. Then we see the comparison between the conventional and the digital education leadership. And to know about emerging trends in educational leadership and the role of a school in supporting educational leadership. For this objective, I will Inshallah Ta'ala share about the experience of my own school, that how we work after pandemic to transform the school from a traditional school to a digital school. Okay. Now, what is educational leadership? Educational leadership is basically, it is a process, and the process of what? To achieving the common goal of the educational organization. For achieving the common goal of the educational organization, the leader of the school and the stakeholders mutually do the effort. So it becomes a process, or I can say that it is the art of motivating the group of the people in the educational organization to work hard, to act, to achieve the common goal of that organization. Now, in an organization, we have two main parts, that is the administration and the management. So the administration and the management mutually work together. They suggest, they support, they mentor, or they coach, and hence they control and supervise. In this way, through steps, they will achieve the common goal of the organization. The concept of leadership was favored because it conveys dynamism and proactivity.
Okay, now let's see the different types of the educational leadership. The first one is the transactional leadership. The transactional leadership focuses on the rewards of incentives to the employees. The leader gives a deadline with the task to be completed, and then the employees work hard, do the task, and at the end, what they receive, the rewards in the form of the cash or in the form of any shield or like this, certificates, or due to their performance. So such type of the leadership are called as the transactional leadership. And in the transactional leadership, the leader only gives the task with the deadline, and the role of the leader become passive. Then the servant leadership. The servant leadership is that the leaders first serve, help out the people according to their perspective, guide them, mentor them, and look at their personal and professional needs, and then lead on them. So this is concerned with the guidance, empowerment, and complete trust in the system or the process. Then the emotional leadership. Definitely the emotional leadership, it focuses on the feelings, on the emotions of the staff and behavior. You know that when we have a lot of people around us, then we have the behavioral changes we can see. So for achieving the common goal, or if to see the vision of the educational institute, it is necessary to keep each and every people's emotion, behavior in the mind, help them, guide them, and motivate them through the emotional intelligence. Then we have the transformational leadership. Transformational leadership is a type of the leadership which is very much familiar or common in their educational organization. It is actually concerned with the commitment of the colleagues, leading change, improve performance, teamwork, transforming of the responsibilities, giving the authorities, including the people in the decision making. So the process of transformation occurs from first step to the last step, and the people become empowered. Let's see what worked best in education. The best leadership for the educational institute, or I can say that the education is suggests that the best is transformational leadership. Why the transformational leadership is best? Because it transforms an employee or a person or a staff member into the leader through different stages. It focuses on the different revolutionary changes in an organization through the commitment of the vision. Sharing environment, favorable environment to work is the main essence of this transformational leadership. Similarly, the leader here in the case of the transformational leadership, the leader help out the employees or the worker to achieve the common goal at every step. And the leader help the supporters, help the employees, help the staff, help the teachers
in the crisis time, in their challenges time, and make them able to take their decision by their own. Others are the moral leadership, which emphasizes on the impact of the values, vision, ethics, etc. Then the instructional leadership. Basically, in the educational institute, the instructional leadership focuses on school core business. The instructions are passed on by the leader or by the head of the institution. And the teaching staff or students or the learning community of the school, they work according to the instructions of the leader, and they will progress and try to achieve the common goal of that educational organization. Let's see the phases of the transformational educational leadership. In the first phase of the transformational leadership, the leader gives the instructions or the command to the employee with clear indication about what they have to do. Then the chain of command starts from the leader to the teacher to the students, and like this. So this is the first phase in which the leader pass on the command or the instruction, try to visualize the way So this is the first phase in which the leader gives the instruction and the followers have to follow the instructions by the guidelines, by the help of the leader. Then in the second, so the leader has the central or the main role. Then the next step is the transition of authorities. The leader transmit the authorities to the subordinates or to the teacher in such a way that he or she guide them in taking the decision. She or he guide them to take up the responsibilities or like this. In the fourth phase of the transformational leadership, the leader becomes facilitator and coach. Then in the fifth phase, the leader empowered, the employees become totally empowered, and they are now able to take decisions by themselves. They take the help of their colleagues instead of the leader. The role of the leader at that time is become minimized, and the leader will look at the new projects for more empowerment. A transformational leadership must be visionary to take their follower and organization ahead in future. Definitely, this is necessary that this is the digital era. अब हम ये कहेंगे कि एक लीडर को जो है वो विजनरी होना चाहिए. वो इस वक्त जिस पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है उसे आगे का या फ्यूचर का सोचना चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, सो दैट अगर इफ ही और शी प्लान्स इन हैंड, देन वो टीचर्स जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फ्यूचर में जो कुछ भी चेंजिंग लेकर आनी है
वो उसको उसकी प्लानिंग उसको अभी से करना पड़ेगी और उसे बहुत आगे तक देखना पड़ेगा. They must be adaptive to change and make sure that environment also favor the change. सिर्फ change जो है वो विजन में ही नहीं लाना, बल्कि ऐसा environment भी लीडर को क्रिएट करना पड़ता है कि जिसकी वजह से जिसकी जो जब वो environment ऐसा क्रिएट हो जाए तो फिर जो एम्प्लॉई हैं उनको उस विजन तक पहुंचना जो है वो इजी हो जाता है. नाउ व्हाट इज द डिजिटल लीडरशिप. अब अगर एक लीडर ने 5 साल पहले जो है उसको ये पता था कि देयर विल बी अ चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हर चीज जो है वो चेंज हो जाएगी, तो उन वहां से जो है वो उस विजन के साथ जो है वो एक लीडर आगे बढ़े. उन्होंने प्लानिंग करी और इस तरह से जो ट्रेडिशनल लीडरशिप, एजुकेशनल लीडरशिप थी, वो कन्वर्ट हो गई डिजिटल लीडरशिप में. What the digital leadership is, according to the Yusuf, Yaqub and Ibrahim, principals are required to train themselves to master digital technology skill, including the possession of digital technology focused leadership characteristics. या यूसुफ, याकूब एंड इब्राहिम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं जो की रोल प्ले करते हैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लीडर, उनको अपने आप को जो है वो इन्हांसमेंट करनी है अपनी स्किल की. अब किस स्किल की? डिजिटल टेक्नोलॉजी स्किल की. डिजिटल टेक्नोलॉजी में उनको अपने आप को मास्टर करना है ताकि वो आगे अपनी टीम को जो है वो ट्रेन कर सके. और डिजिटल लीडरशिप की यही सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिजिटल लीडर इज एन डिजिटली स्किल्ड लीडर. लीडर के बाद जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो टीचर्स कहलाते हैं. अगर लीडर जो है वो डिजिटली इक्विप्ड होगा, वेल अवेयर होगा अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो फिर अपने टीचर को ट्रेन कर सकेगा, टीचर को इनकरेज करेगा कि वो आईसीटी में स्किल्ड हो जाए और डिजिटल जो टेक्नोलॉजी की कॉम्पिटेंसीज हैं उसमें वो आगे बढ़ते चले जाएं, उसमें वो मास्टर हो जाएं, ताकि जब चेंज आए, जैसे ट्रेडिशनल से वो डिजिटल में आए, तो उन्हें कोई मुश्किल ना हो. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर पैंडेमिक क्या हुआ? मोस्टली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो द ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच, लेकिन पेंडेमिक आया, नो वन न्यू अबाउट दैट कि जी इस तरह का की कोई कंडीशन आ जाएगी. बट वो लीडर जो डिजिटली अवेयर थे, जो डिजिटली स्किल्ड थे, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स को डिजिटली इक्विप्ड किया था, ट्रेन किया था, मास्टर किया था, इनकरेज्ड किया था, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. उन्होंने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, या उन्होंने जो है वो टीचिंग शुरू कर दी थ्रू ऑनलाइन. सो डिजिटल लीडरशिप उनके लिए जो है वो मुश्किल नहीं थी. मुश्किल किसको पेश आई? कि जो बिल्कुल वो लीडर्स जो बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में सोचते थे, कन्वेंशनल वे में सोचते थे. लेट्स सी, creating a digital culture to support the need of today's learner begins with the school leader. लीडरशिप हमेशा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट होती है लीडर से, और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जो है वो स्कूल्स में प्रिंसिपल, हेड टीचर या वाइस प्रिंसिपल कहलाता है. सो जो कल्चर क्रिएट करता है वो एक प्रिंसिपल या एक स्कूल लीडर करता है. इसके साथ साथ वो लर्नर्स, चाहे वो लर्नर्स उसके टीचर्स हों, चाहे वो लर्नर्स उसके स्टूडेंट हों, वो उनके लिए एक सपोर्टिंग कल्चर, डिजिटल कल्चर जो है वो क्रिएट करता है ताकि उन्हें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो. डिजिटल लीडरशिप है क्या?
द डिजिटल लीडरशिप इज द लीडरशिप टू ब्रिंग अबाउट चेंज। डिजिटल लीडरशिप है चेंज लेकर आना। अब चेंज किस चीज के थ्रू आएगा? चेंज आएगा डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। लेट्स सी कि हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ चेंज आना जरूरी है। चेंज आएगा विजन में, एक लीडर के विजन में चेंज आएगा। वो जो सोचता है उसको उससे आगे तक का सोचना पड़ेगा, उसको फास्ट अपने आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा, उसे हर चीज की नो हाउ डिजिटली अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इस तरह से अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विजन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जिस विजन को लेकर डिजिटल लीडरशिप से पहले चला जा रहा था, अब उसमें क्या हो जाएगा? एक बड़ा चेंज आएगा। चेंज आएगा लीडर के बिहेवियर में, इन द सेंस ये कि वो मोटिवेट करेगा स्टेक होल्डर्स को, वो मोटिवेट करेगा टीचर्स को, वो मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को। मोटिवेशन बहुत जरूरी है ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का चेंज है। फॉर एग्जाम्पल वो पेरेंट्स या कम्युनिटी को भी बताएगा कि जी हमने अब अपने बच्चों को इस तरह से लेकर चलना है। वो टीचर को गाइड करेगा उनके बिहेवियर में। तो इस तरह से ओवरऑल जो है वो एक डिजिटल लीडर जो है वो चेंज लेकर आएगा इन द बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर of the organization, including the parents, including all the stakeholders. इसके बाद स्किल्स में चेंज आएगी। डेफिनेटली डिजिटल लीडरशिप रिक्वायर्स द टेक्नोलॉजिकल स्किल। तो जब स्किल में चेंज आएगा तो लीडर जो स्टाफ है वो अपने आप को खुद जो है वो क्या करेगा? डिजिटली इक्विप करेगा। वो लर्न करेगा डिफरेंट टूल्स के बारे में जो उसके स्टूडेंट से, जो उसकी टीचिंग से रिलेटेड है। और इस तरह से एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वो एक डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं कि सैलिएंट फीचर्स एजुकेशनल लीडरशिप के इस डिजिटल एरा में क्या है। स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यू नो जब वो गैजेट्स के थ्रू काम करते हैं तो that enhance their creative skills और creative thinkings। उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ जाती है। स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल का टोटल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अब जहाँ पर एक क्लासरूम होता था, बच्चे बहुत सारे बैठते थे और इस तरह से अब वहाँ पर जो है वो चेंजिंग आना शुरू करी है। स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अब वहाँ पर डिजिटल टूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। क्लासरूम में डिजिटल टूल्स करवाए जा रहे हैं। गूगल मीट है, जूम के थ्रू है। इसी तरह से असेसमेंट के प्रोसेस जो हैं वो भी डिफरेंट तरीकों से लिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्लासरूम का एनवायरनमेंट और स्कूल का एनवायरनमेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, we all know that professional development of the teacher is necessary. The enhancement of the skill is only possible by the professional development. अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को एक लीडर जो है वो वर्कशॉप कंडक्ट करता है, सेमिनार्स कंडक्ट करता है। समटाइम वो अपने स्कूल में कंडक्ट करके वहाँ डिजिटली स्किल्ड लोगों को बुलाता है वर्कशॉप के लिए। समटाइम वो टीचर्स को भेजता है। तो इस तरह से प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जब प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर की हो जाती है तो वो उसकी स्किल जो है वो इन्हांस हो जाती है और वो ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करता है। रिसोर्सेज, डिजिटल एरा में डिजिटल एरा की नीड है रिसोर्सेज का होना। रिसोर्सेज नहीं होंगे तो फिर जो है वो डिजिटल लीडरशिप जो है वो नहीं चल सकती। अब रिसोर्सेज में इंटरनेट का होना जरूरी है। आपके पास जो है वो इस तरह की बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स एज अ एजुकेशनल टूल जो है वो होना जरूरी है।
तो रिसोर्सेज जो हैं वो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी देंगे आप अपने स्टाफ को, जब अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं तो न्यू न्यू चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। देन रिलेशनशिप विद कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस तरह से होता है, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, आप ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द डिजिटल एरा, कि हम जब डिजिटल एरा में आ गए तो हम किस किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ। नाउ लेट्स सी कि कन्वेंशनल एजुकेशनल लीडरशिप में और डिजिटल एजुकेशनल लीडरशिप में क्या मेन डिफरेंस हम देखते हैं। कन्वेंशनल एजुकेशनल लीडरशिप में जो लीडर होता था वो एक गुड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर होता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छे से करता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिजिटल एजुकेशनल लीडरशिप की, तो यहाँ पर लीडर जो है वो विजनरी है, वो अपने वक्त से आगे की प्लानिंग करता है, आगे की सोचता है, एक रोड मैप बनाता है अपने स्टाफ, अपने टीचर्स के लिए, ताकि वो उनको वो चीज प्रोवाइड कर सके और इस तरह से वो मिलकर जो है वो कॉमन गोल जो है वो अचीव कर सके। कन्वेंशनल एजुकेशनल लीडरशिप में जो स्कूल लीडर होता है उसका रवैया वो बड़ा रिजिड एंड डिफेंसिव हेड के तौर पर सामने आता था। अब ओपन माइंडेड, फ्लेक्सिबल एंड बोल्ड लीडर है। डिजिटल लीडरशिप में जो ओके, अब जो लीडर है वो बड़ा ओपन माइंडेड है, वो शेयरिंग करता है, उसने शेयरिंग कल्चर क्रिएट किया हुआ है, वो खुद सीखता भी है अपने एम्प्लॉय से और उनको सिखाता भी है। उसमें रिजिडिटी या सिर्फ अथॉरिटेटिव जो है वो स्टाइल नहीं है। पहले जो है वो लीडर जो है वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज का खुद अकेला जो है वो कंट्रोलर होता था, लेकिन अब लीडर play a role of a catalyst to ignite the spark in their employee. The behavior of the leader was like a boss, officer, or dictator. But in the digital era, the leader behaved like a supporter, a team leader, a mentor, a coach, a guider, a collaborator. They adopted the centralized leadership approach. The leader has the central role, the whole sole responsibility was on the shoulder of the leader. But now the leader is working in the shared leadership with the shared leadership approach. The role of the mediator between school and government. While today's digital leadership is having a leader which is actually the representative of the whole school. The leader was accountable to high management and education board only. But in the digital era, a leader is accountable to So the leader is accountable to all stakeholders, including parents, community, students, teacher, and all. The work of the leader in the conventional educational leadership or before the digital leadership was
autocratic work style. That was, we can say that the one man show. But here in the digital era, the leader work with inclusive democratic style, where everyone has the right to share their concerns, to take part in the decision making. In the conventional leadership, the implementation of the government decision was done by the leader. But here, the leader take the decision and execute the same. Keeping accounts, updating school document, and supervise the teacher work was the only work of the leader in the conventional day. But here in the digital era, or the change comes, and now the leader is the monitor. He monitors the teaching learning process, create a conducive learning environment for the students, give the constructive feedback to the teacher, and guide them, help them at every step of their teaching level. Similarly, he focuses on student-centered learning. Okay, let's see the innovative ways of working in schools after pandemic. वे लोगों ने, जिसमें टीचर्स शामिल थे, जिसमें बच्चे शामिल थे, जिसमें लीडर्स भी शामिल थे, सब ने रिमोटली वर्क करना शुरू कर दिया. फिजिकल अटेंडेंस कम हो गई और रिमोट वर्किंग बढ़ गई. वर्किंग इन द सेल्फ मैनेजिंग टीम्स, हर शख्स अपनी अपनी प्लेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है और एक टीम के तौर पर काम हो रहा है. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड लिटिल सुपरविजन. चूंकि रिमोट इंडिविजुअल बेसिस पर भी काम हो रहा है और टीम के तौर पर भी काम हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई और सुपरविजन की अब बहुत जो मार्जिन है वो कम हो गया. उसमें अब सुपरविजन इन द सेंस ये कि अब इंडिविजुअली जो है वो अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जो है वो अपनी सुपरविजन खुद करनी है. कोलैबोरेशन बढ़ गया और मोर डेमोक्रेटिक हो गए. एवरीवन हैज द राइट टू शेयर their point of view, to take part in the decision making, to take steps for which is beneficial for the students. Distance कम हो गए, लोग जो है वो न्यू आइडियाज के साथ आए और इम्प्लीमेंटेशन होने लग गई. तो इस तरह से ये इनोवेशन जो है वो पेंडेमिक के बाद जो है वो एजुकेशनल सेक्टर में आई या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आई. नाउ लेट्स सी कि डिजिटल एरा में जो एजुकेशनल लीडरशिप है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दे फोकस ऑन इनोवेशन नॉट एग्जीक्यूशन. न्यू चीज इनोवेट करना, बजाय ये कि एक लीडर ने जो बोल दिया बस उसे एज इट इज जो है वो इम्प्लीमेंट करना. डिजिटल एरा में ये टीचर्स जो हैं या जो डिजिटल लीडरशिप में जो लोग हैं वो इनोवेट करते हैं. न्यू चीजें, न्यू थ्योरीज, न्यू प्रैक्टिकल्स, न्यू चीजें, लर्निंग अप्रोचेस लेकर आते हैं, बजाय इसके कि अपना कोई भी एक वो एग्जीक्यूशन नहीं करते. डेमोक्रेटाइजिंग लीडरशिप एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जिसे आप सीनियर मैनेजमेंट टीम भी कहते हैं, या वो जो है वो स्टूडेंट्स हों या वो टीचर्स हों. जो एक एटमॉस्फेयर है वो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जहां हर शख्स को जो है वो आज़ादी है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश कर सके. एम्पावरिंग डिसीजन मेकिंग में सबको शामिल किया जाता है. शेयरिंग कल्चर क्रिएट किया जाता है. बेस्ट चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है और हर किसी की जो है वो सुनी जाती है. कैरिज्मा होता है लिसनिंग का एक लीडर के लिए. Appetite for continuous learning, this is actually the professional development.
it is necessary at every step if you want, or if the organization want to go same to same as the educational field is. Then the mental strength or uncertainty. This is related to the you know that the environment बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो एक अनसर्टेनिटी की जो environment है वो खत्म हो जाए और तमाम लोग बेहतर तौर पर काम कर सकें। तो ये सारी चीजें जो है वो डिजिटल एरा की खसूसियात हैं। डिजिटल एरा में ऐसा सब कुछ हो रहा है, इनोवेशन हो रही है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है अपने से जो आपके अंडर में लोग काम करते हैं, एम्पैथी शो की जाती है, लिसन सुना जाता है, लोगों को अंडरस्टैंड किया जाता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज किए जाते हैं, टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है सीपीडी में। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट है वो बेस्ट टू बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर हो या ग्रो करे। ओके, हम ये देखते हैं कि स्कूल लेवल पर क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स आए। यहाँ पे स्लाइड्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बीइंग अ टीचर जो है वो मैंने, या बीइंग अ लीडर जो है वो मैंने अपने स्कूल में या अपनी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम किया। हमने ये किया कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया सबसे पहले स्टेप में लीडर्स के लिए। जो भी हमारी सीनियर टीम मैनेजमेंट थी वो वेल अवेयर, वेल इक्विप्ड नहीं थी, सो हमने नीड बेस्ड जो है वो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पहले लीडर्स के लिए शुरू किया। फिर उन लीडर्स ने सेकंड स्टेप में टीचर्स को ट्रेन किया और फिर इस तरह से म्यूचुअली जो है वो हम स्टूडेंट्स की तरफ गए। सेकंड, रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स देखे गए। रिसोर्सेज इन द वे कि जो हमारी लैब थी उसमें जो इंटरनेट था उसको देखा गया, हमने कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ा दी। ये सारी चीजें जो है वो हमारे रिसोर्सेज में आ गई। पेपरलेस कम्युनिकेशन कर दी। पेपरलेस कम्युनिकेशन, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन होने लग गई, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेशन होने लग गई। इसी तरह से हमने पेरेंट्स को भी कनेक्ट किया इस कम्युनिकेशन में। स्मार्ट क्लासरूम बनाया ताकि बच्चे डिजिटली जो है वो उनको एक डिजिटल एनवायरनमेंट मिल सके। हमने पेरेंट्स की डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम किए ताकि हमने वहां पर पेरेंट्स को बताया कि हाउ टू create a meeting with the teacher through the Zoom। हमने ये सारी चीजें उनके साथ शेयर की कि हम किस तरह से डिजिटल ईमेल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू किस तरह से काम कर सकते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को किस तरह से इस डिजिटल एजुकेशनल फील्ड में लेकर चलना है, उनको घर पे किस तरह से हेल्प आउट करनी है बच्चे की। ये सारी चीजें हमने अपने पेरेंट्स डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम में पेरेंट्स के साथ शेयर की। हमने क्रिएट किया शेयरिंग कल्चर ऑफ द गैजेट्स, क्योंकि मेरा स्कूल एक ऐसे इलाके में है जो बहुत ही ज्यादा आप कह लें कि इम्पोवरिश्ड इलाका है। वहां पर हर किसी के पास जो है वो गैजेट्स नहीं था। हमने बच्चों के ग्रुप्स बनाए, वो ग्रुप्स इस तरह से ग्रुप्स बनाए जो बच्चे एक ही मोहल्ले में करीब करीब रहते थे, हमने उनके ग्रुप्स बना दिए ताकि अगर किसी एक के पास गैजेट मौजूद है तो सब लोग जो हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर लें। हमने स्कूल के दौरान जो है वो अपने कंप्यूटर लैब के टाइमिंग्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के बढ़ा दिए ताकि जब वो कंप्यूटर लैब में आए तो उनको लर्निंग का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले या लर्निंग का टाइम ज़्यादा मिले। हमने एम्पावर किया अपनी एकेडमिक काउंसिल को ताकि वो
बहुत अच्छी तरीके से कैरिकुलम है, सिलेबस है, असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिजिटल टूल या डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो कर सकें। ये इमर्जिंग ट्रेंड्स थे जो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग एन हेड जो है वो इम्प्लीमेंट किया। स्कूल किस तरह से एजुकेशनल लीडरशिप को सपोर्ट कर सकता है? स्कूल प्रिपेयर, ट्रेन एंड डेवलप डिजिटल लीडर। वो डिजिटल लीडर तैयार करे, अपने लोगों को ट्रेन करे, डिजिटली अवेयर करे। मेंटोरिंग एंड कोचिंग ऑफ न्यूली अपॉइंटेड लीडर। जो न्यूली लीडर अपॉइंट होते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल से ही आए हों या वो बाहर से अपॉइंट किए गए हों, उनकी मेंटोरिंग और कोचिंग जो है वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल इस तरह से उनको सपोर्ट कर सकता है। यूज द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एग्जिस्टिंग लीडर टू सपोर्ट न्यू लीडर। डेफिनेटली जो लीडर स्किल्ड हो चुके हैं, जो लीडर इक्विप्ड हो चुके हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से, जो लीडर मास्टर्स हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी में, वो ग्रुप ऑफ द लीडर जो है वो हैविंग देयर एक्सपर्टीज, वो इन लोगों को जो न्यू लीडर्स हैं उनको सपोर्ट करे, उनको कोच करे, उनको बताए, उनको फैसिलिटेट करे, उनकी स्किल इन्हांसमेंट करे। स्कूल सपोर्ट कर सकता है आइडेंटिफाई लीडरशिप टैलेंट इन द स्टाफ। अपने ही स्टाफ में से वो जो ग्रुप ऑफ द टीचर्स हैं, अब देखें आप कि जो वेल अवेयर्ड है, डिजिटली अवेयर्ड है, वो किस तरह उनको जो है वो ऊपर लेकर आए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज रादर देन वन मैन शो। वन मैन शो नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अ गुड साइन, बट द ड्यूटीज शुड बी equally distributed among the teachers. Consider student relationship program. This is the necessary thing for the educational leadership, that they must have that they must have the connection with the student, और वो स्टूडेंट लीडरशिप प्रोग्राम बनाए ताकि स्टूडेंट्स में भी जो है वो लीडरशिप स्किल्स पैदा हो और आगे जाके वो भी जो है वो लीडरशिप का रोल प्ले कर सकें। In the last, I would like to share a quote: integrity, insight, and inclusiveness are the three essential qualities of leadership. Thank you so much from my side. So this is my presentation for today. Thank you so much. Allah Hafiz.